Good evening, class, and in this lesson, I'll be talking about Sonnet 75 by Edmund Spenser. So, starting with the sonnet, see lines 1 to 4 says, "One day I wrote her name upon the strand, but came the waves and washed it away. Again I write it with the second hand, but came the tide and made my pains his prey." सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टरन है सोनेट का, वो क्या बता रहा है कि जो पोएट है, जो स्पेंसर है, वो अपनी लव्ड वन यानी अपनी जो अ, जो स्पेंसर का लव है उसको इमोर्टलाइज करना चाहता है. स्टैंजा स्टार्ट्स बाय सेटिंग द सीन वन डे एंड द लिरिकल वॉइस राइट्स द नेम ऑफ हिज लव्ड वन ऑन द सैंड ऑफ अ बीच. तो स्टैंजा में क्या बताया हुआ है कि स्पेंसर जो है अपनी लव्ड वन का नाम लिखता है बीच पे, बट कुछ वेव्स आकर उसको वॉश कर जाती हैं. द लिरिकल वॉइस राइट्स द नेम इन द सैंड अगेन. तो दोबारा से जो है सेकेंड टाइम वो ट्राई करता है नाम लिखने का, बट एज बिफोर द वेव्स वॉश द नेम अवे. तो दोबारा से जो टाइड आती है, जो वेव्स आती हैं, वो उसे वॉश कर देती हैं. द एक्शन ऑफ द वेव सिम्बलाइज. तो यहाँ पर अगर आप इस क्वार्टरन को लिंक करके देखोगे तो व्हाट डज इट डिपिक्ट. इट शोज दैट कि जो वेव है वो टाइम सिंबलाइज कर रही है, कि जो वेव्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर देगी मैन मेड थिंग्स को. मीन्स जो टाइम है वो डिस्ट्रॉय कर देता है मैन मेड थिंग्स को, कि विद टाइम यू ऑल्सो हैव टू एज अप एंड यू हैव टू डाई एंड लीव दिस वर्ल्ड. तो कह रहा है ये जो एक अटेम्प्ट था स्पेंसर का अपनी लव्ड वन का जो नाम लिख रहा था वो, और उसको इमोर्टलाइज करना चाहता था और वो चाहता था कि वो हमेशा रहे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड टू एम्फसाइज दिस एक्शन द वेव्स आर personified एज दे वॉश्ड इट अवे एंड मेड माई पेन्स हिज फ्री. तो यहाँ पे क्या बताया है कि इस एक्शन को पर्सोनिफाई करते हुए कहा है कि जो वेव्स हैं वो पर्सोनिफाई कर रही हैं एज दे वॉश्ड इट अवे. मतलब उसने क्या किया, वेव्स ने, जो स्पेंसर चाहता था अपनी बिलवड का जो नाम उसने लिखा था उसको इमोर्टलाइज करना, तो उसने उसको वॉश कर दिया, ये बताते हुए कि विद टाइम एवरीथिंग वैनिशेस एंड डिस्ट्रॉयज. एंड जो वेव्स हैं उसने क्या किया, जो स्पेंसर का पेन था उसको अपना शिकार या प्रे बना लिया. तो आई गेस ये लाइन्स क्लियर हो गई होंगी. सो मूविंग फर्दर वी हैव द नेक्स्ट लाइन्स. ओके, so lines 5 to 8, and in this quatrain we'll see, "Vain man," said she, "that does it in vain assay, a mortal thing so to immortalize, for I myself shall like to this decay, and eke my name to be wiped out likewise." The second quatrain describes the dialogue that the lyrical voice has with the loved one. तो यहाँ पे जो सेकेंड क्वार्टरन है उसके बीच में जो कॉन्वर्सेशन है दैट इज बिटवीन स्पेंसर एंड हिज लव्ड वन, एंड द विमेन रिएक्ट्स टू द राइटिंग. और जो यहाँ विमेन है, जो स्पेंसर की लव्ड वन है, वो रिएक्ट करती है उस राइटिंग पे और क्या बोलती है, दैट हिज अटेम्प्ट्स आर इन वेन एज मॉर्टल थिंग्स सच एज हर सेल्फ कांट लिव फॉर एवर. तो वो क्या बोलती है कि जो मॉर्टल चीज़ें हैं, जिनका तय है कि उन्होंने मरना ही मरना है, दे कांट बी इमोर्टलाइज. फॉर एग्जाम्पल, अ ह्यूमन कांट बी इमोर्टल. तो कह रही है कि जो मॉर्टल थिंग्स हैं उसको जब तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज़ इन वेन, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड ह्यूमन बींग्स कांट लिव फॉर एवर. तो विमेन इंट्रोड्यूसेस अ न्यू परस्पेक्टिव टू सोनेट 75. कैसे कि विमेन एक न्यू पर्सपेक्टिव, एक न्यू परसेप्शन ला रही है सोनेट 75 में, क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रही है जो एक्शंस और वर्ड्स स्पेंसर यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है. She emphasizes her mortal nature, means the woman understands that she is mortal and she is going to die, and this is not possible that Spencer can save her, and Spencer can save the name which is written by him on the beach, because she will also disappear like the words in the sand. तो जो विमेन है वो एम्फोसाइज कर रही है अपना मॉर्टल नेचर, एंड शी इज़ हैविंग द परसेप्शन एंड शी इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू लिव फॉर एवर. Thus, it's useless to write her name because she, as the words in the sand, will eventually disappear. So she says that it's useless to write my name on the sand because with me, the name will also disappear because I am mortal.
time and nature are cruel and destroy man-made things. So the women understands and she says कि जो time है और nature है वो cruel है and वो man-made things को destroy कर देता है and it is not possible to save it. So the women is introducing a new perception to this sonnet, and in this quatrain we see the women's perception. So with this we end this quatrain and I hope this is understood by you. So moving further we have the third quatrain, and in the lines 9 to 12 we see, not so quod I, let baser things devise, to die in dust, but you shall live by fame. My verse your virtues rare shall eternize, and in the heavens write your glorious name. So in the third quatrain, here we see that it presents the lyrical voice respond to what his loved one said. So we have already seen in the second quatrain that the woman's perception is that she is mortal and she can't be saved by Spenser. So here we see the response of Spenser. In this stanza, there is a turn, and the tone of 75 sonnet changes. Tone of sonnet 75 changes here. Up to this movement, both the lyrical voice and the loved one emphasized on the mortal nature of them and their creations. So till now, in the first and the second quatrain, we have seen that the emphasis was made on the mortal nature of both the creation, and the lyrical voice tells the women that the baser things will disappear, but she will live on, let baser things devise, to die in dust, but you shall live by fame. So in this quatrain we see that Spencer says कि जो baser things हैं, जो बहुत simple चीज़ें हैं and जो mortal चीज़ें हैं वो disappear हो जाएंगी, but you shall live by fame, because let I'll let your name be written so that you are eternal, you are for forever. Notice the alliteration in these lines. So I hope जो literary devices है वो बहुत अच्छे से clear होंगे. See, जब voice जो है repeat की जाती है, so that is called as alliteration. So see, the device, die and dust, तीनों words में जो आपको repetition दिख रही है of the word d, of the sound d, so that is alliteration. The lyrical voice, a poet will immortalize his loved one in his poems, and because of that she will live forever. So Spencer कहता है कि मैं जो है अपनी poems में तुम्हें eternal कर दूंगा, तुम्हें forever immortalize कर दूंगा कि तुम्हें जो है भूला नहीं जाएगा, and you live forever. My verse means जो मेरी poetries हैं, जो मेरे virtues हैं, जो मेरे thoughts हैं, वो तुम्हें eternal बना देंगे. And in the heavens write your glorious name, और तुम्हारा नाम जो है वो heaven में लिखा जाएगा. तो अपनी जो loved one है, although अब वो उसको जो है इस real world में जो है immortal नहीं कर सकता, but he says that I will make sure that I immortalize my love forever. So by immortalizing his loved one, the lyrical voice puts on her on a heavenly space, as she will be in the heavens with her glorious name. So Edmund Spenser here says that I'll immortalize you, and जो तुम्हारा नाम है उसको मैं heavenly space पे लिखूंगा. I'll write your name in the heavens and I'll make you immortal. So with this we end this third quatrain, and moving to the fourth quatrain we have, so lines 13 to 14 says, whenas death shall at the world subdue, our love shall live and later life renew. So the final couplet of Sonnet 75 summarizes the message of the poem. So here is the message of the poem. So what does it say? According to the lyrical voice, even if everything comes to an end, their love will survive. So Spencer says, even if everything comes to an end, and I know everything is mortal, so everything has to die and come to an end and has to come to a destruction, but I'll let our love survive in the heavens. So this was the final message of the poem, and then again the alliteration has been shown with the W sound of where, when, as and world, and then in the I sound in the second line, L sound in the second line of love, live and later. So the immortal quality in love and death is contrasted to the briefness in life. So जो immortal quality है love की और death की, उसका एक contrast show किया है
कि लाइफ जो है कितनी ब्रीफ होती है. सो आई होप all these four quadrants are clear, and in case you have any doubt, do drop down your doubts in the comment section below. And thank you so much for watching the class. So we'll meet you soon with the next sonnet in the next class.